Hello, myself Dr. Gauri Singhania. Today we will talk about scrotum. So scrotum is actually it is a large glandular pouch of the skin located in the lower part of the anterior abdominal wall, below and behind the penis. क्या क्या है इसके? Here is the penis, and this is the scrotum, and this is scrotum. So it is situated behind the penis and below the anterior abdominal wall. This one is the urinary bladder. This is the urinary bladder over here. If we mark like this, so ये ऊपर का आपको एंट्री एब्डोमिनल वॉल हो गया और एंट्री एब्डोमिनल वॉल के नीचे we have got the penis and the scrotum. What are the content of the scrotum? Scrotum के क्या क्या content है? इसमें दो टेस्टिस मिलेंगे, दो एपिडाइडिमिस हैं इसमें, लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड मिलेगा हमको, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये इसके मेन कंटेंट क्या एक हो गया टेस्टिस एक साइड में, दूसरी साइड में टेस्टिस, वी हैव गॉट एपिडाइडिमिस ओवर हियर and the spermatic cord over here. This is the ductus difference. This is the ductus difference. So these are the silent feature of the content of the testis. Two testis, two epididymis, and lower part of the spermatic cord. Talking about the skin of the scrotum, the skin of the scrotum is corrugated or it is rough due to the exposure, especially on the exposure to the cold. It becomes constricted, and in the hot weather, it gets elongated to maintain the pressure inside the testis. It is bilateral in development. In development में दोनों साइड में डेवलप करेगा ये. It is bilateral in development. It is formed by the midline fusion. दो swelling होंगे और दो swelling के midline fusion से ये scrotum का जो है कि आपको ये formation होगा. There will be two genital swelling. This is one genital swelling and this is the second genital swelling. Two genital swelling combined together, they will create the scrotum. And this midline raphe जो ridge है ये, this midline ridge, this will be seen on the back of the penis and up to the perineum. This midline raphe is continuous on the ventral surface of the penis and backward in the midline onto the peritoneum of the anus. Left side of the scrotum, you can see this is the left side and this is the right side. The left side of the scrotum is larger than the left side, so it hangs more downward than this the right one because of the longer spermatic cord over here. Spermatic cord जो इसके होते हैं वो longer होंगे, इसी वजह से ये जो है आपका तो ये ज्यादा नीचे आएगा और ये जो है आपको कम ऊपर. Now coming to the layers of the scrotum. Layers of the scrotum के बारे में हम बात करेंगे. तो उससे पहले हम ये बात करेंगे कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का कंटिन्यूटी ही आपको स्क्रोटम में नजर आएगा. एंटीरियर वॉल में जो भी स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूटी हमको इस जगह पे मिलेगा. अगर हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यहाँ पर लिखें, तो यहाँ हम इस जगह पे हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लिखें, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल लिखे यहाँ पर और यहाँ स्क्रोटम लिखे. तो इन दोनों जगह पे हमको क्या डिफरेंस नजर आएगा. इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में वी हैव गॉट द स्किन, कहीं कोई डाउट नहीं है कि हमको स्किन मिलता है यहाँ पर. After the skin, what we get is the superficial fossa. Superficial
fossa. And this fossa is divided into two, the fossa of Kemper and fossa of Scarpa. After the superficial fossa, next structure of what we get is the external oblique abdominis muscle. Then we have got the internal oblique abdominis muscle. And finally, we have got the transverse abdominis muscle. And then finally, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? Fossa transversalis. Fossa transversalis. ये इतने सारे स्ट्रक्चर हमको जो कि किसमें मिलते हैं? ये मिलते हैं हमको anterior abdominal wall. पहला skin, then you have got superficial fossa, then external oblique abdominis muscle, then internal oblique abdominis muscle, then we have got the transverse abdominis muscle and the fossa transversalis. So skin of the anterior abdominal wall is continuous with the skin of this one. So skin of the anterior abdominal wall will continue with the skin of the scrotum. The superficial, this dartus muscle will be derivative of the superficial fossa. The external spermatic fossa, this will be derivative of the external oblique abdominis muscle. This cremastic one, this will be derivative of the internal oblique abdominis muscle. What about the transverse abdominis muscle? This transverse abdominis muscle will not give rise to any structure. इससे कोई structure बाहर नहीं निकलेगा. अब ये internal spermatic fossa जो आपका है, this internal fossa will come out from the last structure, that is the fossa transversalis. इस fossa transversalis से जो हमारा structure निकलेगा, that will be the internal oblique abdominis. तो स्किन में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, एंटीरियर वॉल में जितने स्ट्रक्चर है, वही सारे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे किसमें? तो टेस्टिस में, स्क्रोटम में, और स्क्रोटम में आपको बाहर से अगर हम जाएंगे तो स्किन किसका डेरिवेटिव है? एंटीरियर वॉल में स्किन है, तो स्किन उसका कंटिन्यू होगा. अगला लेयर कौन सा है? डार्टस मसल. डार्टस मसल कहां से आया? जो सुपरफिशियल फासा है वो सुपरफिशियल फासा बिकम्स द डार्टस मसल ओवर इन स्क्रोटम, इनवॉलंटरी मसल. वो इनवॉलंटरी मसल है. आगे हम लोग उसके बारे में और बात करेंगे. और जो अगला लेयर है हमारा, जो कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फासा है, दिस एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फासा इज डेरिवेटिव ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल. और जो हमारा इंटरनल क्यूमेस्टिक मसल है, वो डेरिवेटिव है हमारा इंटरनल ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल का. और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फासा है, वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल का नहीं, बल्कि फासा ट्रांसवर्सालिस का वो डेरिवेटिव है. So this is all about the structure of the scrotum. Now the skin of the scrotum is this pigmented, it is thin. It is thin, pigmented, and corrugated. The corrugation is due to the dartus muscle, and the skin has numerous sebaceous gland and the sweat gland. The skin of the dartus muscle has got both the sebaceous gland and sweat gland, which the other part of the body of the skin of the body have. Dartus muscle is subcutaneous. हमने देखा है इसको, it is subcutaneous involuntary muscle, and it is replaces the superficial fossa in the scrotum. Is supplied by the sympathetic fiber in, that is the superior hypogastric plexus. The superior hypogastric plexus
से ये जो है कि सप्लाई हो गया। और ये जो मैंने बताया था ये जो इसका मीडियन राफ है, ये जो मीडियन राफ है देखिए, ये मीडियन राफ है, यहाँ पर एनएस है आपका, पोस्टेरियरली ये एनएस में कंटिन्यू आता है और एंटीरियरली इट विल बी कंटिन्यू ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस। Not talking about the blood supply of the scrotum. Scrotum की जो blood supply है वो कौन कौन से blood supply है इसमें? Is supplied by the superficial, external pudendal artery, the deep external pudendal artery. ये दो आर्टरी तो हो गया। कौन कौन सी आर्टरी है? Superficial external artery over here. Then we have got the external pudendal artery over here, and then we have got the dorsal artery of the penis over here, and so this is the main two artery. One more artery over here. Third one is the scrotal branch of the internal pudendal artery. Third one is the scrotal branch of the internal pudendal artery. And the fourth one is the cremastic branch of the inferior epigastric artery. तो ये 4 arteries हैं जो कि आपको इसको सप्लाई करते हैं। Superficial external pudendal artery, deep external pudendal artery, and then the scrotal branch of the internal pudendal artery and the cremastic branch of the inferior epigastric artery. ये 4 arteries को जो है कि सप्लाई करेंगे। Regarding the venous, it will drain into the internal iliac vein. It will drain into the internal iliac vein. Regarding the lymphatic drainage, it will drain into the superficial inguinal lymph node. इसका जो lymphatic drainage है वो superficial inguinal lymph node में इसका drainage है। Regarding the innervation, see this one. This innervation is divided into two parts: the anterior 1/3 and posterior 2/3. This anterior 1/3 and posterior 2/3 is divided by a vertical axis. This is divided by a vertical axis is over here. This vertical axis will divide it into the anterior 1/3 and posterior 2/3. So anterior 1/3 of the scrotum will be supplied by the ilioinguinal nerve and genital branch of the genitofemoral nerve, both having the root value of L1. दोनों का root value कितना लो? Now coming to the posterior scrotal branch, the posterior 2/3 is supplied by the posterior scrotal branch of the perineal nerve, root value S3. The perineal branch of the posterior cutaneous nerve of thigh, root branch of S3. So the posterior 1/3 is supplied by having the root value of S3. दोनों साइड में root value इसके कितने हैं? दोनों ही nerve की root value posterior scrotal branch of the perineal nerve चाहे posterior cutaneous nerve of thigh, दोनों के ही root value कितने हैं? S3। और जो आपका anterior 1/3 है इसका root value है L1 and posterior 2/3 का root value है L3। एक vertical line से इसको anterior 1/3 और posterior 2/3 में हम लोग इसको divide कर सकते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी होगा। So here you have got the ilioinguinal nerve, genital branch of genitofemoral nerve over here. This one. This is the ilioinguinal nerve, and this one is the genitofemoral nerve over here. This one is the posterior scrotal branch. This is the perineal branch. So perineal nerve and the posterior cutaneous nerve of thigh, they take care of this sort of things. Now talking about the applied anatomy, we have got the scrotal edema, then sebaceous cyst, then scrotal elephantiasis. ये 3 applied structure है जिसको कि हमको जानना है। So scrotal edema क्या होगा? To the laxity of the skin, the scrotum is the common site for edema.
यहाँ पर भी स्किन है, वहां पर मैं आसानी से जो एडिमा वहां पर मैं कलेक्ट हो जाएंगे. Cyst, we already know that it has got the numerous hair follicles, the sweat gland and the sebaceous gland. So it has got a large number of hair follicles and sebaceous gland. Common is the common site for the edema. And in bifid male, it is the pseudohermaphroditism. This condition is known as the bifid scrotum. अगर मेल में दिखाई देगा तो इसको pseudohermaphroditism, इसमें आपको इस कंडीशन को बोलेंगे. Scrotal lymphanthesis is the infection of the filarial parasite, Wuchereria bancrofti, which we already know, causes blockage of the lymphatic vessels. ये lymphatic vessels को block कर देंगे and affect the scrotum and produces the scrotal enlargement called the scrotal lymphanthesis. अगर वो मान लीजिए कि जो scrotum है, उस scrotum का जो lymphatic drainage है, वो lymphatic drainage इसका अगर मान लीजिए कि ये block हो जाएगा, तो fluid will be accumulate over here, and this excess of the fluid will cause the elephantiasis. So next topic is testis. We will talk about the testis in the next class.